गुर का सेवक तिस जापै, गुर का सेवक तिस जापै। गुरु गुरु और ना सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। हूँ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हूँ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। बिन देखे प्रीतमा हूँ रह ना सका, हूँ रह ना सका। बिन देखे प्रीतमा हूँ रह ना सका, हूँ रह ना सका। मैं नीर वह चलै जियो। मैं नीर वह चलै जियो। बिन देखे प्रीतमा हूँ रह ना सका, हूँ रह ना सका। बिन देखे प्रीतमा हूँ रह ना सका, हूँ रह ना सका। बिन देखे प्रीतमा हूँ रह ना सका, रह न सका। रह न सका। बाबा बिख देखिया संसार। बाबा बिख देखिया संसार। बाबा बिख देखिया संसार। रखिया करो गोसाई मेरे, रखिया करो गोसाई मेरे। मैं नाम तेरा आधार। बाबा बिख देखिया संसार। बाबा बिख देखिया संसार। जा तू साहिब तापों के जा तू साहिब तापों के
तुद बिन किस सलाही, एक तू ता सब किछ है। एक तू ता सब किछ है, मैं तुद बिन दूजा नाहीं बाबा। बिख देखिया संसार बाबा, बिख देखिया संसार। जाने बिरथा सभा मान की, जाने बिरथा सभा मान की, और किस पे आँख सुनाए। विण लावे सब जग बोरा, बिन नावे सब जग बोरा, बिन नावे सब जग बोरा, बिन नावे सब जग बोरा। नाम मिले सुख पाइए बाबा, बिख देखिया संसार बाबा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। बिख देखे नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लस संगत श्रेयांश खन्ना अंकल अपना सत्संग शेयर करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेयांश अंकल। ओवर टू यू श्रेयांश अंकल। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी सारी जय संगत गुरु को। जी। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। हाय नंदिनी आंटी। जय गुरु जी। नंदिनी आंटी आप म्यूट पे हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर दिस सेवा। I'm really very happy and feeling blessed to invite our guest speaker today in this divine Shukrana Guruji Maharaj the multilingual platform, Zoom platform. So today, Shreyas Khanna uncle, a blessed soul from Kolkata who's staying in Dublin right now, will be sharing his divine and blessed journey with all of us. तो अंकल को मैंने श्रेयास अंकल वेलकम टू दिस डिवाइन प्लेटफॉर्म। मैंने अंकल को पहले भी सुना है। ही स्पीक्स रियली वेरी वेल। बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। सो अंकल वी आर ऑल वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू नंदिनी आंटी। थैंक यू सो मच अंकल। देयर इज ये कि गुरुजी का एक वचन है जो आपको सत्संग शेयर करने से पहले थोड़ा उसको अपने भाषा में रोशनी डालना है। अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? तो आप इससे अपने भाषा में थोड़ा सा हमें रोशनी डालिए। एंड अंकल उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर सत्संग। वेलकम वंस अगेन अंकल। जय गुरु। आपने बोला था एक दिन मैं आई रिमेम्बर कि एक दिन मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा। तो आज मेरे को चांस मिला टू इनवाइट यू टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। यस अंकल ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नंदिनी आंटी। एंड मैं गुरुजी से बोलूंगा पहले कि भूल चूक माफ करना गुरुजी। आई एम जस्ट ट्राइंग माय फर्स्ट टाइम दिस इज। तो मैं कुछ अगर गलती से बोल दूं तो आई एम वेरी सॉरी। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट इज हैपनिंग। सो भूल चूक माफ करना गुरुजी। आपकी आज्ञा से शुरू करूंगा। पहले तो जो नंदिनी आंटी ने पूछा थोड़ा उसको उस बात पे लाइट डालेंगे कि
अगर किसी का भला अपने दैनिक कर्मों में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली गुरुजी इन अ वे आपको वो हर काम करवाएंगे जिससे आपके दैनिक कामों में ही लोगों के भले होंगे। लाइक देयर इज अ सत्संग दैट आई विल शेयर टुडे, और ये अभी 3 दिन पहले की ही बात है। बेसिकली इसमें गुरुजी इज ऑलवेज अराउंड एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पहला मतलब सो के उठ के इंसान जनरली ब्रश करेगा, नहाएगा। दीज आर द थिंग्स वेयर द बॉडी इज इन एन ऑटोनॉमस स्टेट एंड body is awake but it's still sleeping in the mind, but you do your job in the morning. So similarly कई बार गुरुजी ने ऐसा करा है कि जैसे फर्स्ट टाइम आई मीन लाइक दिस संगत फॉर टुडे इज ऑल अबाउट माय जर्नी। सो इसी बात से ही शुरू करूंगा। फर्स्ट टाइम मैं छतरपुर जा रहा था, मेरी बुआ ने मुझे बोला था, 2014 की बात है, महाशिवरात्रि। एंड मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने गाड़ी में अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, एंड मैंने ऑटो वाले भैया को रोका एंड मैंने बोला भैया गुरुजी का मंदिर कहाँ पर है। गुरुजी के ऑटो वाले के पीछे एक लेडी बैठी थी, उनका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा, इति था उनका नाम, इति। एंड उन्होंने बोला आप गुरुजी के जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूं। एंड मैंने बोला प्लीज प्लीज आ जाइए। एंड देन आई रियलाइज संगत जी, सारी सत्संग को बताऊं, सारी संगत को ये बताऊंगा, अगर वो नहीं आती मेरी गाड़ी में तो मैं पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से गुरुजी का आश्रम अंदर बहुत दूर है। एंड हम लोग एक टाइम कंस्ट्रेंट पे थे उस दिन, एंड महाशिवरात्रि का दिन था। वी रीच्ड 12 o'clock आउटसाइड बड़े मंदिर, एंड लंगर प्रसाद हमारा 6:30 बजे शाम को पूरा हुआ। एंड वी वर ऑलरेडी वेरी लेट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी के दिनचर्या के वजह से मेरा काम बन गया, मैं गुरुजी से जुड़ गया। एंड इति आज बैठ के ये सुन रही होगी अगर कहीं पे भी वर्ल्ड में, आई थिंक शी वाज फ्रॉम गुड़गांव एट द टाइम। इफ शी इज लिसनिंग टू दिस, तो उसके बाद उनको पता चलेगा दैट उनका एक नॉर्मल वे ऑफ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हर डे ऑफ मीटिंग गुरुजी, मीटिंग हर लॉर्डशिप, हाउ डिड दैट हेल्प मी एंड माय फैमिली गेट इन टच विद गुरुजी। क्योंकि मैं कभी नहीं पहुंच पाता, कभी नहीं पहुंच पाता। मैं गाड़ी चला के कितना लेके जाता, इट इज 17-18 kilometers, maybe a little more, maybe I'm mistaken, but it is definitely not 2-3 kilometers. So you have to go and it's a long stretch of road. So because of that person, that Guruji's blessed Sangat Iti, I found my God. So कितना अच्छा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, किसी का भला हो गया। She was anyways on her way in the auto rickshaw going to Guruji's. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना जा ही रही थी मंदिर, बट उन्होंने काम के टाइम पे अपना काम करते करते किसी और का भी भला कर दिया। एंड देन थ्रू मी my parents got involved. Now a couple of my friends are Guruji followers, and they come whenever I'm in India and we do satsang. So एक अच्छी एक्टिविटी से कितना अच्छा हुआ। सो आई थिंक ये मैंने जस्टिफाई कर दिया है क्या जो आपने पूछा था। Beautiful explanation, uncle, with example. बिल्कुल। It's better that way. तो अब शुरू करेंगे गुरुजी की आज्ञा के साथ। बेसिकली जर्नी से ही शुरू करेंगे। मतलब I wasn't that good in meditating, मंदिर जाना and all, and but जब मेरे को मेरी बुआ ने 2014 में बोला ना that you have to go and you have to go and eat लंगर प्रसाद, I don't know how, कैसे, क्या हुआ, what was my thought process, I did not say no. महाशिवरात्रि का दिन था, it was Thursday and it was holiday for all of us. तो ऑफिस नहीं था, that time I was in India working in Gurgaon. So I decided to go and I actually took a school friend of mine as well. So we both went, and वहां से जो चीजें मैंने देखनी शुरू करी हैं अपने आप के बारे में, how things have changed, how life has changed, how life has become more comforting, more beautiful, how you smell that rose in and around you, how things change and for good, that agar kuch bura bhi ho raha hai, so you have this in your mind and your heart that this is only because I'm going to learn from this. Something is going to come that will teach me. Why am I feeling this bad? So हर चीज में गुरुजी has helped me this way. And then मेरे को शुरू से ही बाहर जाना था. I wanted to play cricket outside India, mainly in UK, Ireland.
and cricket culture is good as well. So I was like bahar jaake cricket khelenge. That's what my point of view is. And Guruji ne Ireland within 6 months मुझे भेज दिया. And ऐसा बना के भेजा कि लोग बोलते हैं that अगर भगवान आपको भेजता है ना इस दुनिया में, तो आपके खाने का, आपके पीने का, आपके सोने का, जागने का सब कुछ हिसाब वो पहले करके भेजता है. ऐसे खाली पेट नहीं रखेगा कहीं आपको. So उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा. Now when I look back 7 years, I'm like, Guruji has planned everything, calculated that this is the time he's going to get a job. This is the time he wants to play cricket. Okay, let him play cricket. So I would like to share this satsang. Majorly the first month when I came to Ireland, 2014, October, November, I got a part-time job, which was door-to-door sales. So I started knocking households, selling electricity. One of the guys answered the door and he asked me, you're from India? You play cricket? Come inside. वो मुझे अपने घर लेके गया, अंदर बिठाया. उसने बोला, okay, are you planning on playing cricket in Ireland? And I'm like, I was thinking, and then I showed him the credentials, showed him all the pictures, Facebook and all my profiles. And he said, okay, where do you want to play? And I'm like, I was just checking on Google. Phoenix Cricket Club is good. He said, why will you go to Phoenix? Come to Marion. I'm the treasurer of Marion Cricket Club. And I have not looked back. And that was my first day of the job. So Guruji decided कि इसको cricket खेलना है, इसको cricket का भी बानक बना के दूंगा. दरवाजा नॉक किया, घर में बुलाया इंसान ने मुझे. And he gave me an opportunity to play for his club, and he was the treasurer, and I have not changed my cricket club since then. I'm still a part of it. So गुरुजी ने ऐसे चीजें मेरे को देनी शुरू करी एक बार से एक चीज के बाद, क्योंकि आप इंडिया में क्रिकेट खेलते हो, there is no recognition, and there is so much recognition here. आके मैंने क्रिकेट में भी कुछ अच्छा ही करा. I won 2 trophies in a year. Like straight away we won the leagues and best bowler in the Leinster Cricket Club Award 2017, 2018. So, I mean, Guruji blessed me with a lot of validation, self-validation. क्योंकि हम लोग जब इंडिया में रहते हैं, हमारे जैसे, there is a saying, sorry for being harsh, but there is a saying, 636 है हमारे जैसे. आप एक कटोरी उठाएंगे, उसमें से आपको 12 क्रिकेटर निकलेंगे. एंड यहाँ वहां पे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मुझे गुरुजी ने यहाँ पे आयरलैंड में भेज के मुझसे परफॉर्मेंस करवा के, हर चीज में, काम में, नौकरी में, आई मीन हर सांस के शुक्राने हैं गुरुजी को. हर सांस के शुक्राने हैं, हर लम्हे का शुक्राना है. क्योंकि अभी मैं एक चीज और बोलूंगा जो कि मैं कट टू रीसेंट एक्टिविटी पे आऊंगा. 4 दिन पहले की बात है, मैंने खाना बनाया, खाना गरम करा, मैंने बिस्तर पे लेके आया, बैठा, टीवी ऑन किया. मैंने बोला शिट, खाना गरम नहीं हुआ, खाना ठंडा रह गया. एंड मैंने मसाले बहुत डाले थे, तो आई वाज लाइक, मजा तो तब आएगा जब आप गरम गरम खाना खाओगे. ओ गॉड गुरुजी, खाना ठंडा हो गया, आई हैव टू रियली क्विकली ईट. आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने फोटो ली खाने की कि वो ठंडा हो गया था. Within 2 seconds अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ. I have that video, and इस सत्संग के बाद मैं वो वीडियो शेयर करूंगा आप सबके साथ. आप सब देख सकते हैं फोटो में कि खाना एकदम ठंडा हो चुका है, चावल, and then suddenly धुआं निकलना शुरू हुआ उस खाने के अंदर से. And I'm like, गुरुजी हर चीज सुनते हैं, गुरुजी आपके साथ रहते हैं. Probably he is listening right now. He's like, चलो चलो अच्छा है, और बाकी चीजें बताओ, move on. So we'll move on to the next one. कि जो जर्नी रही है डबलिन में, 2014 में जब आया, I had to work hard, and Guruji made me realize कि what is the power of hard work, where you will go with your hard work. There was a saying back in the day, आपके पेट से विद्या कोई नहीं छीन सकता. So Guruji also showed me that उस विद्या में आप hard work भी जोड़ दो. Once you add hard work, I mean, you will see the blessings and you will feel him more around you, feel more connected. People who work hard, this is another one that was taught to me by Guruji over these years. People who work hard are not insecure about any wrong circumstances that may come in future, because they are so strong in their inner core. And I mean, moreover, going forward in that moment, I realized that 278 job applications I gave in 2015 and nobody called me. मेरी सुबह होती थी. We regret to inform, unfortunately, we've decided to go through with the other candidates who are more qualified.
And I always questioned who are more qualified. I have 2 master's degrees for marketing and sales, and I am eligible to work. And how am I not getting the job? So then I realized that Guruji को ये चीजें दिखानी थी, because हम जैसे लोग generally जो घर से बाहर आते हैं ना, इतना rejection लेने की आदत नहीं होती है, because mom and dad love us, mom and dad care for us, we are always in their hotel kind of. And once we go out, Guruji wanted to show me this in person, that रिजेक्शन झेलना शुरू करो. हर इंसान आपको हाँ नहीं बोलेगा. Get used to people saying no, and you should also learn how to say no, which I'm still struggling. मुझसे नहीं बोला जाता है, मुझसे ना नहीं बोला जाता, and that's something that I'm learning. And Guruji keeps taking tests, and Guruji के टेस्ट बहुत amazing होते हैं. And once you start understanding कि Guruji कौन सा टेस्ट कब ले रहे हैं, you will understand, and you will actually laugh in that moment, and you will actually say, thank you, Guruji. This person is coming shouting at me or is rude to me. You're cutting my karmas. I understand. In that moment, you need to know. Sometimes it's very hard to understand that you are going through this. Sometimes it's very difficult, subtle feeling that you can't catch. But that is what Guruji's consciousness is, that you have to quickly catch what is going on, how people are behaving around you. So Guruji ने इज्जत दी, नौकरी दी, and उसके बाद सिखाया भी. Like हम लोग जब चीजों को पा लेते हैं, हम लोग complacent हो जाते हैं. So Guruji की सीख भी थी कि समझाने की. जैसे 2018 में my PR was due, and I was like, सब कुछ अच्छा है, life is good, everything will be beautiful going forward. But suddenly the PR got rejected. And the reasons were not known to me. But when I look back and I realized it was supposed to happen that way, because that was Guruji's sugar-coated lesson कि बेटा सीखो कहाँ गलत हो. And once you know where you are wrong, you try to amend things, you try to change your lifestyle, you start doing more introspection. मेरा Guruji के साथ direct connection introspection का है. Straight away, if I get a bad thought, Guruji's information and download comes straight away that this is why this is happening. And I've started doing a lot of prayers. Like Guruji introduced me to Anand Path, and this January in 2021 I have done Anand Path almost every day this year, and my life has changed even better. 2018 se my wait was for my PR to come, and I started doing Anand Path in January. My PR came in April, and Guruji also gave me this house that I'm living in right now. And संगत जी मैं आपको बताता हूँ गुरुजी बानक कितना बढ़िया बनाते हैं. I was living previously in a 5-bedroom house with 5 different people, and I was like, I need my personal space. And Guruji was like, Tathastu. And there are these messages that come from Guruji every day on our WhatsApp groups, and I read. Guruji used to say, तेरी एक और परेशानी मुकली मैंने, चल ऐश कर, कल्याण कितना, तेरी ये परेशानी अप्रैल का मुंह नहीं देखेंगे, जा ऐश कर कल्याण कितना. So when you hear this, in that moment, I used to cry. When I used to see those messages, I used to feel so comfortable that Guruji is hugging me in that moment, informing me that it's enough. You've suffered. This will not go beyond April. And my PR came on the 4th of April straight away. And I was like, Guruji, ghar change karna hai. Suddenly, I got a house in Dublin, north side, and the air code was Dublin 7. And I was like, Guruji, jana chahiye, costly hai thoda. And Guruji was like, it's okay. Itna bhi costly nahi hai. What was the rent? 700. And I was like, okay, that's understandable. It's 700. It's Dublin 7. It's an idea. I asked my dad, I'm like very confused. Jana chahiye, nahi jana chahiye. And my dad was like, make 2 chits, put it in a cup, and then crumble karke usme likh do, going, staying. And Guruji को हाथ जोड़ के बोल दो, Guruji, take your decision. मैंने वही किया. I took the chit. It was like going. I was like, okay. But अब Guruji rent और deposit कैसे pay करूँगा? एक साथ सब कुछ एक साथ देना पड़ेगा, और जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का भी rent देना पड़ेगा. So there were a lot of questions. Okay. Suddenly
It was a Thursday it was. Meri company always pays me on Friday. This was the first time in 6 years of working in the same company. I opened my bank account on Thursday morning. My company had paid me salary that week on Thursday, that day. And suddenly one of my friends who actually had taken money and he was supposed to return it to me in the second week of April, he straight away messaged me saying, Macha, I have sent you money. So check. So कहां से गुरुजी ने मतलब जुगाड़ कर दिए पैसों के and बोला कि जा पुत्र जा, घर भी ले लो. And everything fell into places, house, job, PR. Now going forward, another thing happened. When you get the PR, you're not sponsored anymore, you're free to get jobs. I was like, Guruji, एक 9 to 5 वाली job दिला दो, ये door to door नहीं हो रहा. काफी time हो गया, दरवाजे ठोकना, बिजली बेचना, in a way. So I'm like 9 to 5 की normal job बढ़िया रहेगी. So Guruji ने, then again a message came and Guruji was like, don't worry, तू सोच भी नहीं सकता, तेनू मैं की bless कर देता है. Chill कर, ऐश कर, in a way. So I was like, okay. Suddenly, in next 3 days, I got a job in Microsoft. And I was like, कहां से गुरुजी bless करते हैं, कैसे bless करते हैं, Microsoft तो मैंने सोचा भी नहीं था. And apply भी नहीं किया था. A friend of mine who I had trained in the previous job, he got into Microsoft, he recommended, he put in a good word. So again, नंदिनी आंटी की बात पे ही फोकस करेंगे. अपने नॉर्मल दिनचर्या में अगर आप काम करते रह रहे हो और किसी का भला हो जा रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है. इन बोथ द केसेस मेरा ही भला हुआ. इति ने मुझे गुरुजी की तरफ दिखाया, उसका नॉर्मल रूटीन था. मेरे दोस्त ने मेरी तरफ अपनी कंपनी को हाईलाइट करा कि उसका नॉर्मल रूटीन था. ही वांटेड टू रेकमेंड द गाय एंड आई वाज द गाय सूटेबल. सो गुरुजी ऐसे बानक बनाते रहते हैं and he makes you go through your life cycle like normal, but he's blessing you in every second. Now moving on, once I got Stanford, once I got PR, once I got Microsoft, and then Guruji's consciousness was more enlightened. Anand part मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सत्संग जी. मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने मतलब मेडिटेशन करा and they were like कुछ करा कर, and I was just going through कि मैं शब्द सुन लूं या किसी और का सत्संग सुन लूं. So I was like, इसमें बहुत सारी सीख मिलेगी. इतने सारे मैंने अंकल्स और आंटीज के सत्संग सुने हैं that at that time it made me cry, but it gave me so much to learn. गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद बनाना है. So I'm like, Guruji, how can I do लहसुन प्याज वगैरह डालना चाहिए क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं. मैंने खाना बनाना भी संगत जी गुरुजी के लिए ही सीखा. मैं खाना नहीं बनाता था इस साल से पहले तक. I used to order out a lot, but अब मैं खाना रोज बना रहा हूँ and almost रोज बना रहा हूँ. But it all started with गुरुजी के लिए खिचड़ी बनाना. And I started listening कि इसको simple कैसे कर सकते हैं. क्या हम लोग sugar चावल, can we give them चीनी चावल गुरुजी को प्रसाद में. Very next hour, while I was cooking the food, I was listening to some auntie Sangat and she said about chini chawal. And I was like, chini chawal, yahi to mera dimag mein question tha. And Guruji is listening. That's the way where you understand Guruji is informing you. Whatever you are questioning him, he's giving you answers through different mediums. We just need to be conscious and we just need to be very zen in the moment to understand, okay, this is the answer. Where every time Guruji comes and says, मैं कल तेरे घर आ रहा पहचान ले, मैनू शुक्राना कर दे, चाय प्रसाद सर्व कर दें, in a way. So ये सारी चीजें फिर मैं देखता रहता हूँ. नेक्स्ट डे कोई मेरा दोस्त मैसेज कर रहा है क्या कि मैं आ रहा हूँ मिलने. Because in person मेरे हिसाब से Guruji is in all of us. Guruji is light. We all have light within ourselves. So we need to be more conscious. And I still make mistakes. In fairness, I still make mistakes because the feelings, actions, reactions are so subtle that संगत जी हम लोगों को बहुत difficult हो जाता है to catch it in the moment. But the quicker you catch it, the better you feel about yourself that yes, you did not do something wrong, or if you made your mistake, you are actually amending on. Guruji also guided me to a lot of meditation and मेरे को कहीं से मिल नहीं रहा था कुछ ऐसा जिसके साथ मैं connect कर सकूं. Suddenly, I opened a WhatsApp group. I clicked on 35-minute audio
मैंने बोला क्या है ये, एंड आई वाज लाइंग डाउन, मैं उठा हुआ नहीं था, मैं बैठा हुआ नहीं था, आई वाज लाइंग डाउन इन द नाइट बिफोर आई गो टू बेड. मैंने बोला सुन ले. मैंने सुना संगत जी, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अनंत पाठ. सो गुरु जी guided me to Anand Path, and I have always done it over the last 10 months now, and I think it is so peaceful. It drains you, your soul realizes what Anand Path is. Because I invited a few friends to do Anand Path, and some of my friends asked me this, do you know why you cry when you're doing Anand Path? And I'm like, I don't know. I have no idea why I cry, and why the tears come out. Like, जैसे बाद में पता चला कि गुरुजी बोलते हैं जब आप मुझसे कनेक्टेड हो तो आपको पता चलेगा आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं. देयर आर मैसेजेस नाउ दैट अगर आंखों से आंसू आ जाए अरदास करते समय तो समझ लेना मैसेज पहुंच गया. एंड आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ मेनी मैसेजेस आई हैड टू गिव गुरुजी. मेरे को ये सब था ही नहीं अंदर दिमाग में, बट बस रोना आता था. एंड कई बार आई वाज लाइक कम्युनिकेटिंग टू गुरुजी दैट गुरुजी आज तो मैंने चाय प्रसाद भी नहीं दिया है, आपको रोना, आपको पता चल रहा है दैट मेरी अरदास आप तक पहुंच रही है, बिकॉज आंसू तो बहुत आ रहे हैं. एंड देन आई गेट अप आफ्टर द अनंत पार्ट इज ओवर एंड आई सी माई सेल्फ, गले पे मेरे आंसुओं से उन्होंने ओम दर्शन दिए थे. वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ संगत जी, आई एम going to share this on the group as well, so you guys can all see this and experience it, because Guruji is listening. आपको समझ आएगा. माइक्रोसॉफ्ट के जॉब अपॉर्चुनिटी से पहले 1 सेकंड के लिए गुलाब की खुशबू थी, एंड उस समय मैं अपार्टमेंट ब्लॉक्स में नॉक कर रहा था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, वहां पे गुलाब की खुशबू नहीं आती है. एंड इट जस्ट केम एंड आई गॉट अ कॉल दैट Shrey, if you are willing to join the job on Monday, I'm willing to send you the offer letter. 2 seconds pehle I just get, and so Guruji is making me aware, and all the sangat as well. Pehle I was like mango nahi manno. Now it's all about sarbat da bhala karyo Guruji, sarbat da bhala karyo, सारी संगत ਨੂੰ bless करो, इस तो भी ज्यादा करो, अब मैनू इस कीचड़ तो कट ले, क्योंकि हर लेवल हमारा ऊपर जाने के लिए एक लेवल है, और वो हर लेवल has a bit of कीचड़ in it for us to learn. And if we see this, we progress in life, and Guruji is just keeping all of us in the same class, no discrimination. He blesses all, and I hope Sangat ji, I have actually shared enough for today. And I had basically thought कि मैं कुछ नया गाना, कुछ नया सत्संग या शब्द शेयर करूंगा, बट फिलहाल मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया, because Guruji kept on saying this लास्ट 2 हफ्ते से, संगत सुनाई, संगत शेयर कर. He came in dreams as well. The message, he didn't come because I'm sorry, भूल चूक माफ Guruji. The message came. I woke up in the morning that with an urge that Guruji कह रहे हैं कि सत्संग शेयर करना है. It's time. I have to tell the world about how I got my PR. I have to tell the world about how I got a job in Microsoft, and everything else. Like I got to tell the world how the smoke started coming out of my food. I have to tell all of this to the world. I have to show this. This is divine. This is superhuman. And if I feel it this way, I think there are many like me who Guruji is blessing his divine shower of light with. I feel मैं अकेला तो नहीं हो सकता, सब है हम. We are all so lucky. हम लोगों ने जरूर कुछ अच्छे काम करे होंगे पिछले lifetime में, that Guruji is with us in this timeline of life cycle. And I just cannot be more grateful and thankful. He's blessed me with people in my life that are making me become a better person. And even if I try sometimes really hard to be bad, but Guruji gives me messages that actually straightens me straight away in the moment. He's taught me the language of love and kindness through different mediums. He's teaching me the language of non-injury, which is very hard, Sangat ji. I have to say this. It's very hard, very, very hard to try non-injury, because we get irritated so much sometimes that we don't understand how passive aggressive we are in explaining and expressing ourselves to our loved ones.
बाहर वाले को हम कुछ नहीं बोलते हैं, बाहर वाला हमारे को आके कुछ सुना के चला जाएगा, ओके सर ओके सर। हम ये जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनसे ही हम बदतमीजी करते हैं। सो गुरुजी इज टीचिंग अस लेसन्स ऑफ बी हम्बल, नीमा होके रहे, ईगो नु कट के बाहर फेंक दे, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ईगो है। बट हम humans, we are humans, and I understand we make mistakes, but with this opportunity that I have been granted, again I want to inform every one of us in our entire Guruji Sangat that the blessings are divine. We just need to make sure that we try and have a direct connection with him. And I'm just gonna complete this by singing the same song that I sang on Guruji's birthday, which I had not planned, but I think बिना गाने के थोड़ा फीका लगेगा नहीं? So बिल्कुल I was बिल्कुल like, अंकल। let's just do this, and he's watching, so कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया संजीरा नू, सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मथे दियां लकीरां नू, कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दियां जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हथे दियां लकीरां नू। जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड गुरु जी भूल चूक माफ। आई होप I did not do anything or say anything harsh or wrong, but I hope we'll get more opportunities and I can get more people to share their satsang, because these are all learning. हम सीखते हैं दूसरों से. So thank you so much, Nandini aunty, Vasan uncle, Dipali Kapoor aunty. Thank you so much all for giving me this opportunity to speak what I've been going through. And I would hand over to Nandini जय aunty or Vasan uncle, whosoever is there. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Such a beautiful, beautiful, beautiful satsang, uncle. And इतना दिल से खुशी हुआ to see a youngster connected. इनमें comments भी देखा है, आप जैसे कि बच्चे, I have got a son, तो आप इतना दिल से जुड़े हैं गुरु जी के साथ. The way you were speaking, a pure soul, a blessed soul. इतना कनेक्टेड आप जो बोल रहे थे, लाइक इतने यंग एज में आप गुरुजी से जुड़े हैं, एंड योर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो आप हर बात में शुक्राना, कितना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है हमें. सो सीरियसली, योर पेरेंट्स, अंकल, आंट, एवरीवन, वी आर प्राउड ऑफ यू, श्रेयांश. Thank you, Nandini aunty. It's all Guruji's blessings. I don't even think, I was thinking last Saturday ko jab ye cancel hua, so I was like, Guruji wants me to be more prepared for the satsang. And unfortunately, I did not prepare at all. So in this morning, I woke up, because I'm 4.5 hours behind. It's 12 in the afternoon now. So this morning I woke up, I was like, you know what? Don't stress so much. Guruji will speak through you. You don't have to worry about what to say next. So it's all Guruji. He picks you in his arms. And thank you so much, Nandini aunty, for using such kind So words. very true, so very true. आप जो बोल रहे थे, इनफैक्ट we can sense that कि वो गुरुजी बुलवा रहे थे. आपने जो फील किया है वही आपने बोला है. तो it's a indeed divine connection. So we're really very happy and blessed to hear your satsang जो आपने बोला है. So and you were so sorted, uncle. It's so good to see कि आप everything, एक तो है gratitude feeling, what I could see means could feel, and you were so sorted. You were so pleased and happy with the life. जो मिल रहा है उसके लिए शुक्राना, जो मिलेगा उसके लिए शुक्राना. वही गुरुजी हम लोग को सिखाते हैं. And the language of love and kindness, what you were saying. बिल्कुल यही सीख है गुरुजी का. जी. Thank So, you. Thank you so uncle, much. may Guruji bless you with everything in your life.
wishing you all the best. So, Thank you. Uncle Suresh uncle, over to you, uncle. Jai Guruji, Jai Guruji, Shriyansh Jai uncle. Guru Parvar witnessed a divine blissful satsang from you today, and your all messages have given some indications to Guru Parvar in a very blissful way. And I endorse Nandini Auntie's viewpoints that youngsters like you, who are very much dedicated towards Guruji's light and teachings, we are proud of you, Shriyansh. Thank you, uncle. I will also definitely, because ये मैंने satsang whatever I've shared for this year's events, I will also share all the pictures and the videos while it happened. कैसे अनंत पाठ के बाद गुरुजी ने केले के ऊपर अमृत वर्षा दी. I mean, Wow. I will show you. I've taken all the pictures and Guruji makes me go through this situation कि मैं पहले भी ले रहा हूँ. एक दोस्त का message आता है, what are you doing? I'm like, just sitting for Anand Path, and I show them the banana and the chai prasad on the bed. So it's completely dry. So it happens that Guruji coincidentally made me take a picture कि तुम लो पहले before की picture, because जब तुम अपनी आंखें खोलोगे अनंत पाठ के बाद, it will be all wet. And Amrit Varsha in my room in Dublin, me alone, I'm like, मैंने अमृत वर्षा पहले सत्संग में देखी थी लोगों के साथ, but for me, I felt really, I mean, मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं करी. उस दिन शाम को 8 बजे हुआ है ये, और मैं रात के 2 बजे तक I was spaced out कि मैं एकदम मगन हो गया था गुरुजी के उसमें कि ये क्या हुआ मेरे साथ. इतना अच्छा ब्लेस फील कराया गुरुजी ने. So I'm definitely going to share all of these pictures before, after, how the smoke started coming out of my plate, and that was just 3 days ago. Shriyansh, Shriyansh, whenever you will give some indications, we will give you that slot and we will give you fix your that session same day. Don't worry. Whatever day or week you will suggest, we will give you suitable day. Don't worry. We will definitely go by Guruji's raza, and whenever he says, I just I don't know Punjabi that well, so being born in Calcutta, raised in Delhi, I don't know Punjabi that well, but I have to say this: Ik Onkar I learned through Anand Path. I did not even know how to say Anand Path, Ik Onkar, and then I just love Ik Onkar. Even when I'm taking a shower or I'm walking down the road here in Ireland, I'm just singing to myself Ik Onkar completely. So it's Guruji's raza. Very nice. And we all very can nice. be Very razi nice. in that raza. Very nice. Thank you. I will request Dipali Kapoor auntie or Mita Khanna auntie to please say 2 words for Shriyansh uncle. Dipali Kapoor auntie, please. Over to you, Dipali auntie. If Dipali Kapoor auntie is busy, Mita Khanna auntie may come, please. Over to you, Mita Khanna auntie. Good evening, everyone. You can hear me? All of you can hear me? Jai Guruji. Yes, ma'am. You are audible, auntie. Yes, good evening, everyone. Jai Guruji. So I don't know what to say. Everything. Shriyansh uncle said everything. And you know, I am very much grateful to all of you that you have given us this platform to my son to at least to speak जो उसका मन में आया, and I think it came from his heart only, whatever he said, you know. And I am very much शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरुजी का. I am not very good in हिंदी, माफ कर देना सब कोई भूल चूक.
Usually, Auntie, so you may speak in Punjabi. Don't worry. You may speak in Punjabi. no, I am Bengali, sir. I am Bengali, uncle. I'm Bengali, so I can't speak Punjabi also that way. And Shukrana, Shukrana Guruji. Whenever I don't know, I was not aware that today he's going to share this satsang, because I am suffering from some spondylitis, and for last 15 days I'm not well. But I don't know why. Yesterday night when I was sleeping, went to sleep. A thought came in my mind. Ki tomorrow morning only, before going to this physiotherapy, I will take bath. Usually we come back and take bath because nowadays the COVID situation. So whenever you go to hospital or somewhere, any place, other place, we usually come back and take bath. So at night only, I just decided tomorrow morning I will take bath, and I am definitely going to prepare Kara Prasad for Guruji today. I don't know, and I was not aware that Shreyansh is going to do this satsang today. And at morning time, I just woke up and I have taken bath, and then I have prepared this Kara Prasad and I have offered to Guruji. And after that, when I came back from hospital, Dipali auntie called me. She told me, you are not aware that I have sent you one link. I said, I'm not keeping well, so I'm not checking anything. Well, see, today your son Shreyansh is going to speak. I said, okay. Then you send me this link again. So just everything happened, I don't know how. And today only, after a long time, I prepared Kara Prasad for Guruji. Unknowingly or knowingly, I don't know. Thank you, Vasan uncle, and thank you, Nandini auntie. Thank you, Dipali auntie. Thank you, Manish Khanna ji. I don't know whether he is there or not. Thank you, Paru. Yes. Thank you, all of you. Jai Guruji. हर पल शुक्राना. आपका सब कोई का हाथ श्रेयांश के ऊपर बने रहे. गुरुजी का कृपा बना रहे. आप सबको का कृपा श्रेयांश के ऊपर बने रहे. I want to be that he should be a good person, a good human being. That's what I want. That always my parents used to tell us, be a good human being. So I always used to tell my son also, you have to be a good human being. Later on, you have to, whatever you want to do, you can do. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mita auntie. Thank you, Mita auntie. Yes. Thank you, Mita auntie. May I request Dipali Kapoor auntie to say some words, please? Dipali auntie, please. Jai Guruji. Jai Guruji auntie. Jai Guruji. I hope you can hear me. Yes. Yes, auntie. Jai Guruji. Thank you so much for giving Shanu this platform. He deserves it. And he is a blessed child of Guruji. Guruji came to Calcutta in 2013 to bless my brother-in-law. That is a very, very touching satsang, which I'm going to share very soon. And that was the first time we came to know about Guruji. And before that, I had not seen a picture also of Guruji. And he came and he blessed my brother-in-law in a way which we could have never imagined. And he's absolutely perfect now. I will take a slot and I will say this satsang because it really needs courage, a lot of courage to speak out. So when I experienced the miracle, we all fell in love with Guruji. And, we were getting the vibes, and there were only satsangs used to take place in my house, very small ones. And there were hardly 14 or 15 people in the first satsang. So gradually, like I spoke to my brothers, whenever the minute you
come to know about anything good, you feel like sharing with your family, and you really want them also to receive the extended blessings. So I shared with my brothers, but like nobody was convinced. Anyway, they said they were seeing it, but my heart was, like it was so totally attached to Guruji now. And that faith, uh, Vishwas, Pyar, sab kuch. And then, like, okay, then I always used to say, okay, one day you people are all going to come. And I think it took another 6 months. It was Guruji's birthday, and I had called all of them, and they came. And from that day, there was no looking back. But one important thing which I want to tell you is that we got attached to Guruji in 2013, November, October, November. And Shanu is very dear to me. He's my Jan. So first thing, I picked up a phone and I told Shanu, it was a day of Shivratri. And I just told him, Shanu, this is the thing. And I know it's difficult because, that time, all those Asharam Bapu and all those gurus were, like they were, their cases were, it came out in public and all that. So all the more, it was a very difficult time. But I told him, see, whether you believe or not, you just go to Bade Mandir because it's Shivratri, and I've heard a lot about Guruji, Bade Mandir. Till then, I had not seen any picture of Bade Mandir myself. And Shanu was the one, in the first chance only, he said, boy, I'm going. And he went, and he was the first person who showed me the way to Bade Mandir, because that day it was Shivratri and पूरा block था, 2-3 किलोमीटर के पहले उसको उतर के जाना पड़ा, और वो पूरे रास्ते हम लोग को वीडियो दिखाता रहा कि बुआ ये देखो. So like I told him to go, but through him I saw Bade Mandir for the first time. And then there is no looking back, even for Shanu and even for us. So I'm really, really very happy when I see, like children talking like this. And right. Even my children, our children, they are all so connected to Guruji that I would really love to call them one by one and share their journey. Even though I myself have not seen Guruji in his physical form, but I really don't know how and what is that strong bond. It keeps us moving, and constantly we feel we are blessed, protected, hugged, and it's like chinta mat kar, main hoon na. And that main hoon na, it gives so much of strength that you're prepared to leap forward in miles, kilometers. So Shukrana Guruji for being with us. And we are such lucky souls. We all will admit. And he is just, like we're coming across so many miracles. At times I just see the Swaroop of Guruji. I lock my room and I just hug him. That big picture of him, like I just hug him. Even if I'm sad, I cry, I, like howl. Literally, it's like my father. Like literally I hold that big Swaroop which I put in satsangs, that is almost I think 4 feet or so, and I literally hug, and whatever I want to share, I'm howling away. And when I'm happy also, like, and when I see so many miracles here and there, at times I sit in front of the picture and I say, Guruji, आप करते क्या हो? पर आप करते कैसे हो? मतलब मेरी तो क्वेश्चन आंसर और बातें गुरुजी से खत्म ही नहीं होती है. तो यही है, बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत लकी हैं हम लोग कि गुरुजी हमारी लाइफ में है, और हम सबको ब्लेस करें, हम सबका भला करें. और ये तो पक्का ही है कि जो गुरुजी से जुड़ गया वो तो तर गया. So thank you, Shrey. Thank you so much for listening to me. And I feel so happy that you are getting the blessings of Guruji in abundance. And you are such a pure soul. You will go a long way. And you are
you have already started your journey of sharing your satsangs, which will motivate more and more youngsters, and then they know that they are under protection. So this is how we have to, it is our responsibility and it is our duty that we have to spread the word about Guruji and bless the whole world. Thank you, Shanu. Thank you, Shreyansh uncle. Thank you, Suresh uncle. Thank you so much. Jai Thank you very Guruji. much. Shukrana Guruji. Thank you, Dipali aunty. Over to you, Nandini aunty. Yes. Uncle, we can have the Shukrana Bhajan now. संगत जी, अभी शुक्राना भजन, उसके बाद मंत्र जाप, फिर हम आज्ञा लेंगे. Over to you, uncle, for शुक्राना भजन and मंत्र जाप.
चलदी रहनी ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्लो चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर 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 दातिया 11 बजे वाली भूख के लिए अभी और ओवरथिंक नहीं करता। मैं कागज प्रोटीन वाले नट्स है और ये भी चॉकलेट सो आई ओवरथिंक बेड़ी ऐसी कमाल की दुकान गुरु नानक ने ऐसी हट्टी बाबे नानक ने खोली आख्या चारे पासे सुख होण किसे नू ना दो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी और गुरु जी की संगत को लख लख शुक्राना। संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज्ञा दे सर्वदा गुरु जी। कला आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।